Hello and welcome. You're watching Business Today Television. I'm Sakshi Batra and this is your favorite show, Daily Calls, a show that answers all your stock-related queries on the very program. Now, in case you're here for the very first time, WhatsApp number is flashing on your screens. That's where you ask all the questions that you have regarding the stocks in your portfolio. Now, you can also log on to our YouTube channel. That's on Business Today. Go on to Daily Calls Live. Use the comment section there to send me some of your questions. I'll be happy to address it with our top guests who will be joining in just in a bit. Let's welcome our first guest now. Mr. G. Chokalingam joins in. He's the founder and MD of Economics Research, joining in on the program. Warm welcome to you, sir. Thank you so much for taking the time out. Mr. Chokalingam, how would you really assess the current state in the markets? We've seen 2 weeks so far of positive move on the D Street, today being a day when some profits are being taken off as well. 6 consecutive sessions of a move on the positive side is definitely what we've already seen, buoyed by largely the domestic news flows on GST. How would you look at the sentiment right now on D Street? Yeah, generally weekend, these days people are a little nervous, so we see selling pressure on Fridays. But otherwise, my stand is same. That is, unless US disrupts IT service exports to US, we don't have to worry at all about this tariff war initiated by US against India, because even after the tariff war, the global agencies have maintained around a 6.3% GDP growth. The rating also improved for India. And third, monsoon is so good, cumulative rainfall is normal now. And over 90% of 36 subdivisions have received a normal or excess rainfall. Inflation is low, interest rate reversal is likely to happen. Most probably aggressive cut would happen. And government has given direct tax concession through budget. Now Prime Minister has proposed indirect concession also to the middle class through GST. That is also going to be a big trigger. So therefore, I firmly believe that the outlook is too good, whether you take short term or long term. The only risk factor one has to watch out is whether the aggressive tariff war initiated on India's goods, whether that gets extended to India's service exports as well. If that doesn't happen, then we are set for a very robust outlook. There is no need to worry much about corporate earning also, because I firmly believe that the factors I have mentioned, which will improve the aggregate demand. Apart from that, oil price is down over 18%, which is likely to go down further because in September, OPEC will release more oil. And also the global growth is going to correct marginally because of the tariff war. So oil price may fall much more than this 18% from the 52-week high. That also would augur well for Indian market, because that's what helped in the last 20 years. Whenever there was a global pain, India had to gain through the cheaper oil price. So all put together, along with the festival season, I remain very optimistic about corporate earning improving from October, December quarter of this year. So therefore, uh, one has to continue to invest, but only suggestion is that you invest at least 40-50% in the Sensex Nifty basket, so that something goes wrong at the global level, because of tariff war, your equity allocation will be quite safe. It will be defensive because domestic institution will continue to support the Sensex and Nifty basket stocks. So this is my firm view. Okay, got that. So overall view, all our viewers have actually got on the understanding of various factors that are at play on the Indian markets at this point in time. Let's start off by taking some questions then. Mr. Chokalingam, a lot of our viewers are waiting to hear from you and the advice that you can share with them on their stocks. Anuj Singh is our first viewer on our YouTube, who says, good afternoon, I want to know about Apollo Microsystems. I have this share about at 120 odd levels, or 90% of a profit is already that he's reaped in on this Apollo Microsystems. Currently also the stock is up by about 15 odd percent. So he wants to understand from you, is it the right time to book profits, or should he continue to hold on onto Apollo Microsystems? What exactly would your suggestion be? Yeah, I studied it in detail. Uh, I would give a sell call. Of course, investors can take their own decision to always do it in a phased manner, because some of the perception-driven stocks, irrespective of whatever fundamental valuation, they do keep moving up. Correct. So my view is sell in phases. That's my research view.
sell in phases from this point onwards, but do also speak to your own financial expert to take a consolidated view there and take a decision. Shomalia Biswas, okay, we'll ask this later maybe because it's a more of a daily call kind of a question on a trading zone. Let's take another one. This one is Ankur Modi. He wants to know about two stocks. One is Geo Finance and the other one is BLS International. For an investment view for long term, what is your suggestion? Geofinance, of course, we know, has been in focus since the time it got diversified and listed. A lot of retail investors have been focusing on this. What's your current view on Geofinance and on BLS International that mostly plays on the travel tourism theme? BLS International, I have studied. It's a good stock, slightly strict valuation, but it's a good quality growth stock. Return ratios are also very good. So it's a good stock for long term. And Geofinance, same view. I believe it is one of the best financial service companies for the long term. Apart from like being price to book value, cheaper than many financial service companies. Two more trigger points I would like to stress. One, it is getting into all the segment of financial services with the global leaders. So that's going to reward this company in a long term in a big way. And also holding over 1 lakh crore worth of land share also will add a lot of value to its net worth, and it will be in a better position to use that as a leveraging for expanding the lending business in the medium to long term. I believe it's a great stock at this price for medium to long term. Okay, fair point. Let's take the next one. This one is from Sanjeev Kushwaha. He says, sir, मेरा सवाल green panel पर है. Please राय दीजिए इस stock को लेकर. Green panel has been under some subdued pressure also of late. If we look at the share price, you will clearly be able to know that currently also it's just soft by about 1%. In the last 5 days, it's lost by about 4%. In last 1 month, it's been down by about 10 odd percent. Green panel industries, any suggestion here? Uh, I mean, it looks too expensive in terms of P ratio. Even the margins are very low. So I would give a sell call purely based on the Okay. fundamentals. Okay. Archana Sahu says, hi Sakshi. Hi Archana, how are you? The question is that I'm making about 100% profits on Eternal, Mazagon, Doc, Irida. So congratulations to you, Archana, on that. But she says there are some stocks where I'm sitting on a 50% loss, like a Sula Vineyards and SW Solar. What should be the strategy? I do have a extremely long-term view of 4-5 years. 4 5 years both should do well because Sula is more of cyclical. Of course, the problem was that it had a very enriched valuation that got corrected now. Otherwise, it's a good brand, good backward integration. Long term, definitely it should do well. And the other stock is SW Sterling Solar, will, that's yeah, Sterling and still, Wilson yeah, Solar. yeah. Yeah. So here also the company might have a pressure in the short term. This also should do well in the long term with a big industrial firm having a good stake. I believe in the long term it can get good business and it can grow. Both are good for long term, but definitely short term the pain may continue. Okay, in case Archana, you do have that long term view, don't fret, it could continue to do well, but yes, in the short term there could be some more pressure. Aarti Jain wants to know, hi, can you please help me understand from the auto ancillary space, how do I look at Jamna Auto? Is this a good stock to hold at this point in time? Again, the focus because of the GST rationalization is coming on the entire space of auto and auto ancillary. How would you look at Jamna Auto, sir? I am sorry, I have not studied it in detail, so I'm not able to give my view. Okay, can you share a view on the entire auto space for that instance? You know, which one are the stocks that you really prefer at this point? Certainly, very interesting question. Most segments are growing in single digit, particularly the passenger vehicle segment is growing in single digit. And also, the exports to US are into difficulty. So what one has to do is you have to see what a component company will cater to the domestic demand and also will be least impacted by slowdown we are seeing in the automobile industry as a whole. So when see these two things, I get a lot of optimism on the tire stocks
because tire industry sells almost about 70-75% of the total sales for the replacement market within the country. And secondly, the oil price is down, as I mentioned earlier, 18% from a 52-week high. And the domestic natural rubber price is also down 18-19% from the record high we saw in the last year. So both augur well for tire industry. So it would remain least affected by the US tariff war, and it would also least affected by slowdown in the entire OEM automobile space. So this is a one sector segment of the automobile industry one can aggressively look at. So we have a buy recommendation on MRF Limited. I believe it's a phenomenal stock. I have set a new record target price, for this stock. Personally, I do not own any of the stock I have mentioned so far. Okay, let's take another one then. Some questions are also coming in on our WhatsApp, so we'll start taking some of those. Naveen from Bengaluru writes in, sir, I want to know about Bellrise Industries. I have bought it at the current levels today for a short-term target. What exactly will you advise? Now, Bellrise, since the time the IPO came in, the stock has actually performed pretty well. He bought this around 144 today. The stock has moved up even further. 148 odd levels can be seen today. For a short-term horizon, do you think there could be continued upside? For this kind of stock, unfortunately, the viewer, if he listens to me, who follows a value principle, might go wrong. So I am not optimistic. So, but the investors should take their own view because I'm not comfortable with the valuation. But he should consult technical expert to Okay. take it. So, Naveen, hold on. We'll also get you a technical advice on the show for sure. Muthu from Tamil Nadu writes in, he says, I want to know about Bharat Dynamics. I have these shares in my portfolio at 1565. I plan to hold for a short term, only about 3 months odd. So, help me understand what is the outlook on this stock and when should I look to exit? I would exit now because valuation is extremely stretched. Even short-term fundamentals are not supporting the stock. Okay. Next, we have this question from Rahul. He is from Lucknow. His question is on Vedanta. He says, I've taken a fresh entry in the shares for dividend benefit. So, should I hold the same or exit? What exactly would your view be? There's been a lot of volatility on Vedanta of late as well. There's also been, concerns from SEBI that have been brought in ahead of the demerger as well. We have seen that the hearing has been postponed to September 17th now as far as the demerger of the companies are concerned. But the company is consistently talking about newer dividends that are to follow, and that's why investors are interested. How would you explain to viewers what to do here? Yeah, I would sell Vedanta. Apart from the concern you have expressed about regulatory issue, there is one more concern. Its oil business is quite significant, although it is not on the top two segments in terms of profit contribution. It is one of the significant contributors. As I mentioned, the oil price is down over 18%. I am expecting oil price to fall very badly. That should also affect Vedanta. So considering these two concerns, I would prefer within the metal space stocks like Hindustan Zinc or Indalco rather than Vedanta. So for me, Vedanta is a good sell, and Indalco or Hindustan Zinc probably the good buy within the metal space. Okay, got that. Next, we have Sindhu Ramdas's question. Sindhu wants to know about Poly Medicure, that's into the medical equipment space, and wants to know whether it is a good time to buy this afresh at the current levels. What would you advise on Poly Medicure? Today also it's up by about 4.5% at 2054. Yeah, the P valuation is a very high, over 58 trailing P. But of course, to be fair to the company also rewarded shareholders in a very big way. So, often it comes back with strong growth. So, my research view is that the risk-taking investor, this could be a probably suitable stock for medium to long term. Okay. Let's take another one. This one is from Vinod Chaudhary. Vinod Chaudhary says, hi, good afternoon to everyone. Good afternoon to you also, Vinod. He says it's an excellent show for us retail investors. So thank you so much for this. Thanks a lot, Vinod. Good to hear from you. That you are consistently watching the show and are getting benefited from it. We definitely have to thank our top market experts like Mr. Chokalingam, who come here to help out all our viewers really understand whether their strategies are on the right direction or not. The question that he has today is whether I can take
a fresh entry in NIBE Limited. This is listed on the NSE at 1183 odd levels, and when we look at the last 1 month's performance, it's actually been on a dismal note. 28% of a loss is what we have already seen in the last 1 month. Although when we look at the last 6 months move, you will still see about a balanced 13% kind of a rally. The stock moved up from 768 odd levels to all the way up to smart moves that we actually saw of 1700, 1800 odd, and thereafter the stock has again seen a decline on this one. Any idea on this one, sir? Do you track this NIBE Limited? Yeah, I studied because a lot of investors, they wanted to pick up the price at when the perception was trying the stock. So just to share my view, I have studied it. I am not comfortable at all because P ratio is very high. Even in terms of enterprise value to EBITDA is over 30 times. And also I saw the balance sheet and decompose the expenses. So it spends a lot of money to buy goods and services and market them. So even if it is a genuine company, I believe there will be more pressure on the margin. That's my personal view. So therefore, I would give a sell call based on my own research analysis on NIME Limited. Okay, got that. Taking the next one then, this one is from Nancy. She says, good afternoon. Good afternoon to you also, Nancy. The question is on Swan Energy. She says the stock has been seeing consistent buying. I want to know, will there be a pullback where I can look for a fresh entry here? Last time also I had actually invested, but I had booked losses of 12% odd. And once now again I'm seeing strong moves on Swan Energy. So what should I be doing? One can hold it. The stock has already paid a heavy price. It has corrected a lot. And I have studied it based on the business model and all. It's a good to hold. I believe from this level, 10-15% upside is possible. Okay, got that. I hope this has also really helped you out in understanding the clear strategy there. Next, we have this question coming in from one of our other viewers also, Arihant Yogi. He says it's a very useful show for us. Thanks a lot for writing in, Arihant. The question is on Ashoka Buildcon. He says that I have already bought this stock at 178. Can I hold or should I average at the current levels? What would your advice be? I would not give buy call on the stock. I studied the balance sheet, I studied the debt and the interest payment made by the company. So I am not comfortable in giving a buy call. So of course, thematic play happens, perception driven upside do happen. So if it is making losses, it's a good to hold, but I would not suggest buying the stock at current price. Okay, fair point. I hope this has helped you out in understanding a clear view. Let's take the next one. This one is from Ashwini Pahwa from Dehradun. Ashwini says, hi Sakshi, how are you? I'm very well. Thanks for asking, Ashwini, and I hope the same for you. So the question is on Artemis. This is Medicare services company, Artemis, and currently trading at about 238 odd levels. The question is that I bought this stock at 256 and currently I'm facing losses. For short term, what is the view that you will be able to share on Artemis Medicare? One can hold it because a lot of foreign investors are showing a lot of interest in this kind of healthcare business. Stock also corrected, and business model also very comfortable one. So since the stock has corrected a lot, it's a good to hold. Okay, good to hold. Next, we have this question from Sunil Kumar. Sunil Kumar says, good afternoon to you as well, Sunil. The question is on Grasim. What is the best entry level for if I have to invest in 1.5 years time frame? We've been again seeing cement is back in focus because again of GST rationalization that is coming in. There's an expectation that because GOM has already accepted centers two slab structure that will have 5% and 18%. Since cement was in 28% basket, there is a likelihood that cement can now fall under 18% basket. How would you look at Grasim then, sir? It's a great company, no doubt, but it has played out to a large extent. And if you see the return ratio also not great. So I would have a bias for in the large cap space stocks like M&M or SBI. Those stocks or even L&T. These three stocks give me a lot more confidence than Grasim in the large cap space.
Okay. Gunjan writes and says, I'm a big fan of Business Today channel. Thank you so much, Gunjan, for your appreciation. The question is on Flair Writing as a stock. She's holding this stock at 320 levels. Would you advise a hold or an exit at this current level? What would you advise? I'm sorry, I have not studied. I needed time to study, so I am not able to answer it. Okay, hold on with that thought, Gunjan. We'll ask this with another expert joining in shortly on our program too. Next, let's take another one. This one is from Gul. She says, Hi Sakshi, I am a big follower of Chokalingam sir. I want his views on REC and PFC. I have purchased both these stocks in my portfolio. REC at 420, PFC at 401. But now the price has gone down. So should I continue to add more stocks in my portfolio for both REC and PFC? Post a significant correction, both of them trade at 1.2 to 1.3 level price to book value. I feel it's very attractive because the growth will take the price to book value close to one time, and once in 2 3 years these two stocks get re-rated also. So it's a good to hold. Even one can buy for a medium to long term, both REC and PFC. Okay, got that. Let's take the next one. This one is from Mayank Chaudhary. He's from Ghaziabad. He says, I'm holding Shilchar Technology shares, 300 shares priced at 3,499 levels. I want to know what is Chokalingam sir's view over the next 1 to 2 years on Shilchar Tech. Okay, we'll definitely get that addressed. Mr. Chokalingam, have you studied this one? I'm extremely sorry. I have not got into details. Okay. Very little complex for me, this kind of stock, so I would skip it. I'm sorry for that. Okay, any CDMO stock that you can suggest to him for long term? That's the second question that Mayank had, in case you could advise on any CDMO linked stock. See, I would definitely wait for a US decision because the US president has threatened even the domestic companies to cut down the margin. So I am sure he might disrupt the margins of the exporters to US. So I would wait. I am focusing only on the pharmaceutical companies which primarily cater to the domestic market. It is always for retail investors good to wait for when there is some possibility of outcome, major outcome coming decision. So better to wait. So I would wait because even otherwise the valuations are not that extremely cheap. So still one wants, one can consider stocks like Zydus Life or Lawrence, but personally I would wait for US decision on this. Okay, got that. Towards the end, Mr. Choklingam, let's try and help all our viewers who've been big followers of yours to, seek some stock ideas from you. Maybe if after the end of Q1 and amidst these big changes that are taking place on the macro policy level, how would you look at the opportunities that present themselves? Any fewer newer stocks that have come onto your radar? Yeah. So I am writing to my clients saying that you focus on domestic demand driven themes. So from that aspect, one is PNB housing. It is trading at 1.1 time price to book value. The GST reform also would be positive for housing loan companies. And second, KCP Limited. This is the only stock I am also personally holding it, my family company. I believe that it is a potential wealth creator. I may be wrong. People should take their own decision or consult investment advisor. But I have a personal view that this is a great value stock, KCP Limited, huge land bank, and sugar business in Vietnam is making a lot of profits. And cement business also is there. And it has got 5 sources of captive power generation. And apart from that, it has got a huge land bank. In the recent AGM also, they talked about the land bank. And third, East India Hotel. I am extremely bullish on this. This is one of the cheapest hotel stock as compared to Indian Hotel or ITC Hotel or newly listed Bangalore-based hotel. And a lot of expansion. I mean, if you look at their balance sheet, latest balance sheet, yeah, long list of expansion by East India Hotel and very good management. So these are the three stocks. I am extremely bullish and I have recommended very strongly to our clients from our research analyst desk. And among all the stocks I have discussed, I hold only KCP Limited. I do not own any other stock directly or indirectly through friends or proxies or relatives.
Okay, fair point. I hope this has answered all our viewers' questions on the Recording select stocks stopped. that are deeply researched and can actually help you to build or add to your portfolio over the long term. Thank you so much, Mr. Choklingam. Good to have you with us again, and thank you so much for explaining to our viewers key strategies on their stock queries as well. We'll have you soon, very soon again on another platform. Thank you so much. All right, viewers, we'll start looking at the markets yet again. It's almost half time for trade today, and we have actually seen quite a bit of profit booking after 6 consecutive days of rally on the day straight. We've given up 25,000 mark, and we've now also come in very, very close to the 24,900 mark as well, trading near the day's low at 166. Let's now welcome another top guest on our platform, Mr. Raghavendra Singh, market expert, favorite on daily calls, is joining in with his views. Warm welcome to you, Raghavendra ji. Good to have you with us. What's your fresh view on the markets? We did test and held on to 25,000 for about 2 sessions. Today again, it's gone to the bears. What would you say? Very good afternoon, Sakshi. As far as Nifty is concerned, we have seen an island reversal in the Nifty on daily chart. On weekly chart, we have seen a bearish engulfing on the closing basis. Today is the closing, and I think if we close below 25,000, it is a clear-cut indication for the lower side. So I believe 24,700, 24,600 is on the card. There is a small gap of 200 point from 24,600 to 24,900, which made on announced of 15th अगस्त. उसके बाद जो अनाउंसमेंट था उसके बाद हुआ था, तो आई थिंक वो एक लेवल है जो टच करना चाहिए. बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों जो है मुझे लग रहा है बेयरिश ग्रिप में है, और अगर ये मंथली क्लोजिंग 25,000 के नीचे होती है तो मैम अगेन मुझे लगता है कि इतनी अच्छी न्यूज आने के बाद जीएसटी का अगर बाजार फिर भी सस्टेन नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हम शायद 24,300, 24,200 की ओर फिर दोबारा बढ़ रहे हैं. ओके राघवेंद्र जी, बहुत सारे सवाल आए हैं आपके लिए भी, हमारे सभी दर्शकों के, तो एक एक करके पहले सवाल लेते हैं, फिर आपके पसंदीदा शेयरों के ऊपर भी आएंगे. सबसे पहला ये सवाल मौमिता का है, कोलकाता से. लिखते हैं, हाय साक्षी, इज इट अ गुड लेवल टू री एंटर बीएससी and what is your exact outlook on that one? Well, timely question from you, Momita. We have been seeing pressure build up on BSE shares since the last couple of days. राघवेंद्र जी, एक ये भी कारण है कि कल सेबी चीफ ने ये इंडिकेशन दिया था कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की जो ड्यूरेशन है या टेन्योर है, इसे शायद बढ़ाया जा सकता है. एक कंसल्टेशन पेपर आएगा जिसके बाद ये पता चलेगा कि हफ्ते भर तक की जो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, इसे डेफिनेटली बदलने के लिए सेबी की प्रेफरेंस है. कितना और ये बढ़ेगा ये आगे जाते हुए पता चलेगा. तो ऐसे में वॉल्यूम्स का जो लॉस हो सकता है एक्सचेंजेस को या ब्रोकरेज हाउसेस को, उसको लेकर काफ़ी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में इस शेयर में. करंटली इस पॉलिसी चेंजेस के बीच में जो वॉलेटिलिटी आ रही है, इसे देखकर फ़ायदा उठाना चाहिए. नहीं साक्षी, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ये जो है इसने बहुत ही अच्छा सा 2500 के ऊपर का लेवल था, ब्रेकआउट दिया था, बट वो सस्टेन नहीं किया. अभी मुझे लगता है 2100 की ओर हम जा रहे हैं, 2160 टू बी प्रिसाइज. वो लेवल एक ऐसा है जहाँ छोटा सा गैप है, वो गैप बढ़ सकता है. उसके नीचे हम 2000 के आसपास जा सकते हैं. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इमीडिएट इसको बेचना है, बट मुझे लगता है जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है चार्ट का, 2100 का लेवल आना चाहिए. वेट फॉर सम मोर टाइम, देन यू कैन एंटर. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ललित का, हैदराबाद से. लिखते हैं, हाय मैम, आई वांट टू नो अबाउट ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज. हाउ वुड यू रियली लुक एट इट? इज इट एडवाइजेबल टू एंटर एट द करंट लेवल्स? ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है करंट लेवल्स पर फ्रेश एंट्री के लिए. ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि इसको अभी फिलहाल इमीडिएट एंट्री नहीं करना चाहिए. वेट फॉर सम मोर टाइम. मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्टॉक और नीचे आ सकता है. बहुत अच्छा नहीं है. एक तो पहली बात वॉल्यूम बहुत कम है, तो मेरे हिसाब से वेट कीजिए, देन यू कैन एंटर अगेन. ठीक है. प्रवीण कुमार लिखते हैं, राघवेंद्र सर, अदानी पोर्ट्स लिया हुआ है 1121 पर, कितना समय तक रुकना चाहिए और क्या टारगेट प्राइस के लिए रुकें? अडानी पोर्ट मुझे लगता है बिल्कुल अडानी ग्रुप की जो है वो सबसे अच्छी कंपनी है, तो इसको मुझे लगता है कि यहाँ से आप जो इसको होल्ड करिए, और अगर ये थोड़ा सा और नीचे मिलता है 1320 या 1300 के रेंज में, आप चाहे तो और ऐड कर सकते हैं. 1280 का स्टॉप लॉस दीजिए. ठीक है. नेक्स्ट हम ले लेते हैं सवाल, हमारे पास है
पराग मिल्क पर आया है, स्वाति जलंधर से पूछती हैं 340 के भाव पर लिया हुआ है, कैन आई ऐड मोर, ये इनका सवाल है। पराग मिल्क नहीं, मुझे लगता है वेट करना चाहिए, आप ज्यादा ऐड मत कीजिए अभी। मुझे लगता है ये स्टॉक 226 तक आना चाहिए, वहां पे आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो, बेटर है। अभी फिलहाल अगर आपका होल्ड है, कीप एन स्टॉप लॉस ऑफ 224 का, और 224 के स्टॉप लॉस पर रख दीजिए। अगर बजा तो एग्जिट, नहीं तो अगर नीचे आए तो ऐड कीजिएगा। ओके, गॉट दैट। चलिए अगला सवाल लेते हैं। गोविंद भाटिया हैं, ये दुबई से हमारा शो देख रहे हैं। स्वागत है आपका गोविंद जी। लिखते हैं साक्षी जी, मुझे हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताइए। 100 शेयर्स है मेरे पास, 200 के लेवल पर होल्ड करूं या बुक प्रॉफिट करूं? मुझे लगता है इनको यहाँ से एक बार स्टॉक रिवर्सल देगा। आई थिंक 120 125 तक के लेवल आ सकते हैं सर। अगर आप चाहें तो इसको वहां पे जाके आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एग्जिट करने की राय नहीं है, बट थोड़ा सा अगर नीचे मिले तो और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। अंकुर मोदी लिखते हैं, हाय साक्षी, आई वांट टू नो अबाउट सेजिलिटी, कैन दिस स्टॉक मूव टू 3 डिजिट्स इन द नेक्स्ट 1 ईयर? राघवेंद्र जी, सेजिलिटी के ऊपर क्या एक बुलिश व्यू है आपका अगले 1 से 1.5 साल में? अगले 1 से 1.5 साल में तो नहीं, बट अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है मोदी साहब, तो मुझे लगता है कि आपको ये 100 रुपए के ऊपर दिखाई देगा। 2 से 3 साल कम से कम लगेंगे। अगर वहां तक आप रुक सकते हैं तो इसको होल्ड कीजिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल आया है कोमल का बेंगलुरु से। ये IRFC के बारे में जानना चाह रही हैं। रेलवे क्षेत्र का शेयर 132 पर खरीदा हुआ है ऑलरेडी, अब पूछना चाह रही हैं होल्ड करके रखें या फिर सेल कर दें? देखिए, मेरे हिसाब से अभी स्टॉक में बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा अगले 2 से 3 क्वार्टर तक। मुझे लगता है 110 रुपए के आसपास स्टॉक आना चाहिए। अगर आपको निकलना हो तो आप यहाँ पे निकल जाइए मैम। दोबारा आप चाहें तो 100 रुपए 110 रुपए के रेंज में एंट्री कर सकती हैं। ठीक है। चंद्र सिंह दोदिया हैं, ये न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं और लिखते हैं, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ राघवेंद्र सर एंड योर शो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स ऑल्सो। साक्षी जी, थैंक यू सो मच चंद्र सिंह जी आपके अप्रिशिएटिव वर्ड्स के लिए। क्वेश्चन इनका है बोराना वीव्स के ऊपर। लिखते हैं कि IPO में अलॉटमेंट इनको मिला था, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आपसे एक व्यू जानना चाहते हैं बोराना वीव्स को लेकर। बोराना वीव्स देखिए, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने बहुत अच्छा जो नेकलाइन था वो ब्रेक किया डाउन साइड में। तो मुझे लगता है सर यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक जो है अभी नो ट्रेडिंग जोन में है। 200 का लेवल के नीचे भी जा सकता है। यहाँ से 220 अगर क्रॉस कर क्लोज किया तो ऊपर जा सकता है। तो बेटर है अभी जस्ट वेट कीजिए। 210 के नीचे गया तो बिल्कुल नहीं लेना है। 220 के ऊपर गया तो एंट्री करना है। क्लियर कट यही एडवाइस है। अभी फिलहाल इसमें एंट्री ना करें। ठीक है। दीपक मखीजा हैं, लिखते हैं कि हाई, आई एम होल्डिंग 200 शेयर्स ऑफ कैम्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 2800, प्लीज एडवाइज मी, आई वांट टू ऐड मोर टू माय पोर्टफोलियो। You can definitely add it here, sir. I think this stock is heading towards 4200, 4400. You can keep a stop loss of 3600 on the lower side. ओके, गॉट दैट। अनिल कुमार लिखते हैं, यूट्यूब से जुड़ रहे हैं, कैन यू प्लीज गिव मी एन एडवाइस ऑन हैवेल्स? फॉर श्योर अनिल जी, विल डेफिनेटली आस्क राघवेंद्र जी टू गिव अस अ व्यू ऑन दिस वन। राघवेंद्र जी, GST की काफ़ी चर्चा हो रही है और खबरें इस तरीके से हैं कि GST रैशनलाइजेशन के बाद कई कंजम्पशन स्पेसेस में एक फ़ायदा मिल सकता है। FMCG हो गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोज़, इन सभी सेक्टर्स के ऊपर काफ़ी फोकस है अभी। हैवेल्स जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी है और पहले तो वायर्स और केबल्स में थी और अब अपना पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा कर चुकी है और फैंस, इवन एयर कूलर्स, ACs, इन सब में भी आ रही है। किस तरीके से आप देख रहे हैं हैवेल्स के शेयर को अभी? साक्षी, मुझे लगता है हैवेल्स का शेयर एक बार 1520 तक आना चाहिए। तो मैं इमीडिएटली स्टॉक में एंट्री करने का रहूंगा, क्योंकि 1600 का बहुत ही स्ट्रांग ऑर्डर है। इतनी अच्छी न्यूज आने के बावजूद भी 1600 का लेवल जो क्रॉस नहीं कर पाया। सो आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए। GST के ऊपर जो क्लैरिटी है वो एक बार आ जाए तो मुझे लगता है फिर से इस स्टॉक में एंट्री करना। 1520 आ सकता है, वहां पे अगर आता है तो बाई करना है। 1500 रुपए के स्टॉप लॉस से 1555 1560 के लिए। ओके, गॉट दैट। चलिए आगे भी और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। गुंजन लिख रही हैं फ्लेयर राइटिंग के ऊपर, ये लिखती हैं कि 320 पर खरीदा हुआ है। फ्लेयर राइटिंग को लेकर कुछ व्यू? नहीं मैं ये स्टॉक ट्रैक नहीं करता।
ओके, गॉट दैट। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। व्हाट्सएप पर हमारे पास सवाल आया है गुल का, ये केरला से हैं और लिखती हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदा हुआ है इन्होंने 2783 का, और 1 ईयर का इनका व्यू है। किस प्राइस पर और ऐड कर सकते हैं ये आपसे जानना चाह रही है। लगातार इस स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल रही है, 3400 के लेवल्स आ चुके हैं, अभी भी प्रॉफिट में है, अभी एवरेजिंग की सलाह होगी? नहीं, मुझे लगता है 3200 आता है, वहां पे एवरेज कीजिए। 3200 एक बार आना चाहिए। स्टॉक जो है बेस लाइन वही है 3200 आ जाए मैम, तो बिल्कुल आंख बंद करके बाई कर लीजिए। 3400 मुझे लगता है कि आपको एक साल के अंदर ये 4500 का भाव दिखाई देगा। ओके, गॉट दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और शेयर्स के ऊपर भी क्वेरीज ले लेते हैं। डॉक्टर रजत गोयल, ये कोट द्वार उत्तराखंड से हमें लिखते हैं। लिखते हैं, हाय साक्षी, आई हैव बीन वॉचिंग योर चैनल एंड शोज सिंस लास्ट 2 years and this has really helped me get through the market hours. Well, thank you so much, Dr. Rajat Goel. Truly means a lot to us that you've been consistently watching Business Today television for the last 2 years as a loyal viewer, and you've greatly benefited in your market journey. That's what the aim of Business Today television is, that through our various shows, by getting you the top market experts advice, we get you the right understanding and the strategy in the course of market investments. Let's take up your question now. The question is on Concor. Raghavendra ji, he says, I have 40 shares of Concor, bought at 640 levels. I want to know whether I can buy more or mark my losses. What exactly would your advice be on Concor right now? Sakshi, I think the stock is hovering around 550 level. Stock has a very strong base around 524, and I think 524 is very reachable. So I think he should keep any stop loss of 520. If the stock touch over there, I think he can add more at this point of time, and then he can keep any stop loss for 500 for the target of 600 plus level. Okay, let's also look at some of the other questions coming in. This one is from Shubha. Shubha wants to know about Adani Power, bought at 598. What's your suggestion on Adani Power from here? Adani Power, definitely one can definitely buy here. I think for 580 is the stop loss. Target is 600 and plus. अभी 600 के आसपास 590 के आसपास घूम रहा है। एक बार 600 का लेवल क्रॉस करता है मैम, तो फिर मुझे लगता है 620 630 आना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आप 610 605 का लेवल पकड़ सकती हैं। 580 का स्टॉप लॉस दीजिए। Okay, got that. I hope this has helped you out in understanding the clear view there. Let's also take Arjun from Kolligal writes in, good afternoon to you Sakshi and good afternoon Raghavendra sir. I want to know whether it's a good buy to invest in EIH hotels for short term. Well, EIH was also a buy from Mr. Chokalingam, who had come just a while back on the program as well among his top choice of stocks. Hotel stocks back in focus for the second half of the calendar year. What would you say, Raghavendra ji, on this one? I think stock is forming cup and handle formation. तो यहाँ पे स्टॉक बाई कर सकते हैं। 400 रेंज में आए तो आप बिल्कुल ऐड कीजिए। स्टॉप लॉस दीजिए 390 का, टारगेट होगा 425 एंड 455। Okay, got that. I hope this has helped you out. Teja writes in from Nellore, says, I have a 3-year-old daughter. I want to invest for her marriage from now onwards. I have 3 lakh rupees right now available for my disposal. Could you suggest any 3 stocks where I can invest these 3 lakh rupees in and keep them for her marriage? So 3-year-old daughter, planning in early, believing in stock markets that they can actually give him a return, create wealth, so that by the time the daughter is of marriageable age, enough and more corpus has got created. Raghavendra ji, how will you help Teja? Sakshi, when my daughter born around 12 years back, Okay. I invested in KRBL, खुशीराम बिहारी लाल। ये राइस की कंपनी है, बासमती राइस की कंपनी है। 16 रुपए में मैंने शेयर बाई किया था मेरी डॉटर के लिए, और वो आज 13 साल की है। 13 साल में ये स्टॉक ने मुझे 4 बार बोनस दिया, डिविडेंड दिया, स्प्लिट मिला, और अभी भी ये स्टॉक 480 रुपए पे है। तो ऑलमोस्ट मेरा जो 16 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, ऑलमोस्ट मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, और वो इन्वेस्टमेंट बढ़ के अभी बहुत ज्यादा हुआ। तो मैं इनको यही एडवाइस दूंगा कि आप, KRBL में मेरा अपना भी निवेश है, मैंने अभी भी थोड़ा बहुत उसको और एड ऑन किया हुआ है। बहुत अच्छी कंपनी है,
और राइस एक्सपोर्ट करती है बाहर। और इनके अलावा आप चाहें तो आईटीसी जो कि बहुत अच्छी डिविडेंड पेई कंपनी है, आप चाहें तो वहां भी निवेश कर सकती हैं। इनके अलावा आप जो है कुछ और स्टॉक में आप थोड़ा बहुत होमवर्क कीजिए, आप चाहो तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ये दो स्टॉक मेरे फेवरेट है, ये दोनों स्टॉक्स में मुझे लगता है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये मैंने मेरी डॉटर के लिए भी इन्वेस्टमेंट इन दोनों स्टॉक में किया हुआ है, ये डिस्क्लेमर है। फैंटास्टिक, ओके। उम्मीद करते हैं तेजा यहाँ पर एक आपको ओवरऑल व्यू मिला हो, जो स्टॉक्स के लिए आपने गाइडेंस मानी है वो भी मिली हो, और एक अपने ही निजी इन्वेस्टमेंट से भी आपको एक राय दी गई है राघवेंद्र जी द्वारा। सो आई होप दैट दिस रियली हेल्प्स यू आउट एंड वी विश योर डॉटर वेल टू। Let's look at the next question. We have a lot of them coming in on our WhatsApp. So this one is from one of our viewers, Anikshan from Bengaluru. Anikshan says, I have MCure Pharma. इस पर बताइए 1477 पर खरीदा है 2 to 3 years के लिए, यहाँ पर क्या आपकी राय होगी? बिल्कुल होल्ड कीजिए सर, बिल्कुल बेचना नहीं है इस स्टॉक को। मुझे लगता है बहुत अच्छे लेवल पे खरीदा आपने, और अभी और अगर ये स्टॉक नीचे भी आए किसी दिन 1200-1300 ऐड कीजिए, बहुत अच्छी कंपनी है। अगले 2 से 3 साल में मुझे लगता है कि 2700-2800 रुपए का भाव आपको यहाँ से दे देना चाहिए। Okay, got that. विनोद लिखते हैं, हाय साक्षी, आई वांट टू नो अबाउट जेजी केमिकल्स. आई हैव अ 60% प्रॉफिट ऑन दिस वन. शुड आई एवरेज और कंटिन्यू टू होल्ड माय पोजीशन? व्हाट एग्जैक्टली वुड यू एडवाइज? You should definitely hold this stock with the stop loss of 400 लेवल। अगर वो 400 का स्टॉप लॉस देखिए होल्ड कर सके, या फिर 450 का तो होल्ड कीजिए, कोई इशू नहीं है स्टॉक में। अगले 1 से 2 साल तक बिल्कुल स्टॉक को होल्ड करके रखिए, आपको 700-750 का भाव सर यहाँ से मिल जाएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ पर भी आपको पूरी तरीके से गाइडेंस मिल गई होगी। नेक्स्ट हम लेते हैं, हमारे पास एक और सवाल आया है, ये मयंक चौधरी का है गाजियाबाद से। ये शिल्चर टेक के ऊपर आपसे जानना चाहते हैं राघवेंद्र जी। शिल्चर टेक 300 शेयर्स हैं इनके पास, 3499 के लेवल पर खरीदारी की हुई है, 1 से 2 साल तक के लिए रुक सकते हैं। बिल्कुल होल्ड कीजिए सर, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि स्टॉक में से निकलना चाहिए। ठीक है, स्टॉक थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मोमेंटम है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, होल्ड कीजिए, 2 साल तक आपको बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। ओके, होल्ड करके रखिए, बहुत बढ़िया। आपको यहाँ पर आगे भी जाते हुए रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, तो निकलने की अभी कोई राय नहीं है, अभी आप बने रह सकते हैं इस शेयर पर भी। नेक्स्ट हमारे पास एक और सवाल आया है, और ये है हमारे पास क्वेश्चन ख़ास तौर पर सागर का, जम्मू कश्मीर से। सागर, हाय, गुड आफ्टरनून टू यू। द क्वेश्चन इज़ ऑन स्टील एक्सचेंज। 1 महीने के लिए यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं आपसे कि किस तरीके से स्टील एक्सचेंज के ऊपर आगे बढ़ें, और क्या राय होगी यहाँ पर? मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल इमीडिएट इसमें एंट्री करना चाहिए, वेट कीजिए। स्टील एक्सचेंज में आपको अगर होल्ड करना हो तो थोड़ा सा समय दीजिए, उसके बाद फिर आप इसमें एंट्री कीजिए। ठीक है, शोमाला बिस्वास हैं, कोलकाता से लिखते हैं, 7 लॉट हैं इन्होंने खरीदे हुए हैं निफ्टी के, 28 अगस्त की एक्सपायरी के लिए, 25,150 का कॉल ऑप्शन है, 40.96 पर लिया हुआ है। अब जानना चाह रहे हैं बीटीएसटी के लिए होल्ड करके रखें या नहीं? मुझे नहीं लगता कि इनको यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, ये तो खैर ऑप्शन लेके रखा है इन्होंने। आप चाहो तो इस स्टॉक में एक स्टॉप लॉस जो है, ये ऑप्शन में सॉरी, आप जो है 30 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। अगर ये 70 रुपीज के आसपास जाता है तो आज ही बुक कर लीजिए, नहीं गया तो मुझे नहीं लगता सर इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम है, एक्सपायरी है अगले हफ्ते, तो हो सकता है कि अगर बाजार 50 पॉइंट ऊपर भी खुले तो ये प्रीमियम इमीडिएट नीचे आ जाए। ओके, गॉट दैट। नेक्स्ट संजीव पूछते हैं कि ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज पर आपकी क्या राय होगी? ग्रीन पैनल फिलहाल लगातार दबाव में चल रहा है, एनी व्यू हियर? ग्रीन पैनल मुझे लगता है मैम इनको स्टॉक को अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, इमीडिएटली एंट्री नहीं करना है। स्टॉक थोड़ा मुझे लगता है स्ट्रक्चर खराब है, तो अवॉइड कीजिए, अभी इसको एंट्री मत कीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ पर भी आपको पूरी तरीके से संतुष्टि हो गई होगी कि कैसे आगे बढ़ना है इस शेयर पे। एक सवाल हमारे पास आया है लोकेश मशीन्स को लेकर, एक फ्रेश एंट्री लेवल के लिए राय पूछ रहे हैं, 1 साल तक के शॉर्ट टर्म के लिए या फिर 3 से 4 लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों 1 साल और लॉन्ग टर्म 3 to 4 ईयर्स तक के लिए पूछना चाहते हैं। कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? साक्षी, पिछले हफ्ते हम लोगों ने इसी स्टॉक के बारे में बात किया था। किसी ने आपसे पूछा था कि राघवेंद्र सर का मल्टी बैगर स्टॉक कौन है अगला, मैंने इसका बताया था 200 रुपए के आसपास था ये स्टॉक, 200-203 रुपए के आसपास। बिल्कुल बाई करके रखिए सर, ये
आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा देगा रिटर्न। आज तो सर्किट पे है, बट मुझे लगता है कि बहुत जल्द 1-1.5 साल के अंदर यहाँ से 600, 700, 800 रुपए का भाव आपको दिखाई देगा। बिल्कुल सोचना नहीं है, ये मल्टी बैगर स्टॉक है ही, तो इसके बारे में आप रोज रोज सवाल मत पूछिए, रोज रोज गूगल मत करिए, तो इसको लेके छोड़ दीजिए। लेकर इसको छोड़ देना है, आपको निवेश कर देना है। अगले 1-2 साल में, 3-4 साल में आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न्स डेफिनेटली दिलवाएगा, ये भरोसा है राघवेंद्र जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीनू का, ये लिखते हैं, हाय साक्षी, गुड आफ्टरनून, इज इट द राइट टाइम टू एंटर सूसलॉन? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, कई बार हम लोगों ने देखा स्टॉक जो है यहाँ से रिवर्सल लिया, 60-65 के आसपास था, और वहां से 58-57 ये अच्छा लेवल है, बिल्कुल बाई कीजिए सर। आप यहाँ पे 56 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, और 62 रुपए का पहला टारगेट होगा, और उसके बाद 65 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सवाल आया है अंशु का, ये वेल्सपन लिविंग के बारे में पूछना चाह रहे हैं। 141 के प्राइस पर हैं इनके पास शेयर्स, अब आगे क्या करें? मुझे लगता है कि वेल्सपन लिविंग आप बिल्कुल यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऐड कीजिए। छोटा सा स्टॉक, मुझे लगता है कि एक बार 5-6 रुपए नीचे भी आ सकता है, तो इसके लिए घबराइएगा मत। 110 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, स्टॉक को बाई कीजिए। 130 और 150 ये 2 टारगेट होंगे। क्या बात है। ओके, एक क्वेश्चन आया है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है राघवेंद्र जी, खासतौर पर आपके लिए। क्वेश्चन है कि जो राघवेंद्र सर, मैं आपको फाइनेंशियल कम्युनिटी का बी प्राक मानता हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं वीनस पाइप्स में क्या करूँ। 1629 के लेवल पर मैंने खरीदा हुआ है, व्हाट शुड आई डू 6 मंथ्स पर्सपेक्टिव के लिए? सौरभ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू for writing in this question and giving new nomenclature to one of our favorite guests Raghavendra ji. B प्राक आपको बोल दिया है फाइनेंशियल कम्युनिटी का। पहले तो इसके ऊपर ही अपनी टिप्पणी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बी प्राक तो खैर ठीक है, बहुत बड़े सिंगर हैं वो, मैं उतना बड़ा एनालिस्ट हूँ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट कोशिश यही रहती है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड। और सर, ये स्टॉक के बारे में सर मैं ये बताऊंगा आपको कि स्टॉक, मुझे लगता है एक बार ये वीनस जो है यहाँ से नीचे आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि 1250 1260 का लेवल एक बार आए तो वहां पे इस स्टॉक में जो एंट्री कर सकते हैं वो एक लेवल होगा जहाँ पे आप एंट्री कीजिए, फिर हम दोनों बैठ के जो एक साथ गाना गाएंगे बी प्राक के। All right, okay, wonderful. Saurabh, I think that's the best advice that you could have got from your favorite guest on the program. So ensure that you are here every time that he comes on the channel. And we will also ask Raghavendra ji to memorize some lines of B Prak's songs. Next time, he's going to be singing that on the channel. नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल आया है ये है जतिन दवे का, और ये लिखते हैं कि साक्षी प्लीज़ मुझे बताइए एशियन पेंट्स में क्या मुझे फ्रेश एंट्री करनी चाहिए 3 महीने के नज़रिए से? पिछले कई क्वार्टर्स से काफ़ी वीकनेस का सामना करना पड़ा है एशियन पेंट्स को, क्या अभी भी खरीदारी बनती है? 3 महीने के लिए किस तरीके से आगे बढ़े? साक्षी, मुझे लगता है स्टॉक एक बार 2400 के लेवल को टच करना चाहिए, 50% रिट्रेसमेंट। अभी जो रिसेंट हुआ है रैली उसका, मुझे लगता है 2400 का लेवल आएगा, वो लेवल अच्छा होगा। दवे साहब, आप वहां पे बाई कर लीजिए, मुझे लगता है वहां से 3 महीने में आपको अच्छा खासा मिलेगा रिटर्न। क्योंकि देखिए, क्रूड ऑयल की वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है इस स्टॉक में है प्रेशर, ऑयल टेंट वाली जितनी भी कंपनियां हैं ऑयल की वजह से, तो एक बार नीचे आए तो बाई करिए। अभी फिलहाल इमीडिएट बाई करने की राय नहीं है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के शो पर। पटेल इंजीनियरिंग पर सवाल है, फ्रेश एंट्री के लिए अवधीश ठाकुर पूछना चाहते हैं आपसे, कैसा लगता है आपको शो? मुझे लगता है मैम एक बार इसको अवॉइड करना चाहिए, अभी फिलहाल मत लीजिए। ये स्टॉक आपको 36 रुपए के आसपास आए तो एंट्री कीजिए, अभी फिलहाल एंट्री करने के लायक नहीं है, तो वेट करना है आपको। वेट करना है आपको, अभी फिलहाल एंट्री की राय नहीं है। ऑल राइट, वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज एपिसोड ऑफ डेली कॉल्स। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए इस शो पर और तमाम क्वेरीज हमारे सभी दर्शकों की एड्रेस करने के लिए। सो थैंकिंग बी प्राक ऑफ फाइनेंशियल कम्युनिटी ऑन डेली कॉल्स फॉर द डे। थैंक यू सो मच सर। Markets viewers, 24,925. There's a 158 point of a cut, but let's see how this pans out in trade. After 6 days of gains, we could be seeing some speed breaks getting hit and some profits being taken off. But do stay tuned on to Business Today Television. Market coverage continues on the other side. I'll see you at the closing edition. And of course, we also have a special coverage coming up and 1 p.m. in case you're interested in getting to know everything about GST 2.0, the next generation reforms. How is it going to really impact you, your wallet and the overall economy? Then stay tuned at 1 p.m. We have an exclusive show coming in.